हमने ये देखा था कि जो कॉमन मिसकंसेप्शन है होम्योपैथी धीरे काम करता है, दैट इज वेरी अनट्रू, एंड द रीजन फॉर दैट इज समवेयर वी मतलब ये मिथ जो हम लोग मरीजों को कहते हैं, मरीज हमको कहते हैं होम्योपैथी धीरे काम करती है, हम लोगों के ही द्वारा होम्योपैथी देयर इज नो अदर। मरीज को नहीं तो कहाँ से पता कि होम्योपैथी धीरे काम करती है या होम्योपैथी फास्ट काम करती है। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि होम्योपैथी पहले में क्या कहते हैं कि मेडिसिन कैसे काम करनी चाहिए एक्यूट केसेस में, क्रॉनिक केसेस में। पहले में क्या गाइडलाइंस देखे गए हैं कि व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरियंस यूजिंग व्हिच वी कैन एक्चुअली स्पीड अप द क्योर। इवन क्रॉनिक केसेस जहाँ पर आपके क्योर्स रैपिड होंगे, फटाफट होंगे, you don't need to tell the patient कि होम्योपैथी धीरे काम करती है. If you have got a true symptom, then medicines work really fast. You can see action within a few days, few weeks, and sometimes even very chronic cases get resolved in a period of couple of weeks or couple of months, which, considering the general prognosis of those cases, is a very short duration. It's a very short duration. अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जिसको सारी उम्र दवाई खानी पड़ रही है या पिछले 10 साल से दवा खा रहा है, उसको अगर आप 4-6 महीने में ठीक कर देते हो तो दैट्स नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन, इलाज लंबा नहीं है, दैट्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। बट कंडीशन इज दैट यू क्योर दैट पर्सन इन दैट ड्यूरेशन। ये नहीं कि यू जस्ट गिव देम रिलीफ एंड रिलीज टेल देम कि ये दवा तो खानी पड़ेगी, दवा खानी पड़ेगी तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एन एलोपैथ। अगर आप भी थायराइड के लिए उसको थायरॉक्सिन 30 खिला रहे हो, रेट्रोविर 6x खिला रहे हो, आयोडीन खिला रहे हो, स्पोंजिया खिला रहे हो और कह रहे हो खाता जा, तो फिर वो थायरोनॉल क्यों नहीं खाए, क्यों ना खाए? सो व्हाट वी वांट टू कन्वे इज कि होम्योपैथी डज वर्क फास्ट. Hahnemann laid 3 basic conditions for that. Number 1, the remedy should be minimum. That is the first criteria. Then you have to select a correct remedy, and this is where the difference between classical homeopathy and complex homeopathy comes. Because in complex homeopathy, ये पहला बात तो कभी rule तो follow ही नहीं होगा. You are never selecting the true similar, so you cannot ever talk about cure. तो उनकी बात कैसे करोगे जब आप पहला जो बेसिक क्राइटेरिया है होम्योपैथी का, जो बेसिक टेनेट है, उसी को ही आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, उसी को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू क्योर पेशेंट्स. पैलिएशन इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट आवर एम इज नॉट पैलिएशन. अगर हमको पैलिएशन और मेंटेनेंस थेरेपी पे रखना है, देन इट्स बेटर टू सेंड द पेशेंट टू then it's better to send them, because then you are not doing anything different. Then you are not doing anything different. Actually, you are using drugs which you don't know what is their physiological action. एलोपैथ्स को ये तो पता है कि उनकी दवाओं का फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है. होम्योपैथिक कंपाउंड्स में जो 1x, 2x, 3x में दवाइयाँ हैं, for most medicines, we still do not know what is their physiological action. We do know the proving symptoms, but in 1x, in mother tincture, you are not getting those proving information. You are not using that medicine on the basis of proving information. What you are using and what is the effect of the medicine is the physiological effect. It's not the dynamized effect. So the first point was similimum. The second point given by Hahnemann was that the remedy has to be given in minute doses. Okay? So minute doses. That means 4 times. Not 1x, not 2x, not 3x. Give the least possible quantity necessary. It would be 1x in some cases, but in majority of cases, it's not 1x, it's not 2x, it's not mother tincture. I am not saying that a medicine in 1x or mother tincture could not be a similimum. It could be similar to the case. But for most cases where you need to cure the patient, where you do not need to medicate the patient, you usually need a slightly higher potency. It could be a 3C, it could be a 6C, it could be a 12C, it could be a 18C, it could be a 30C, it could be a 1M, it could be 10M. But the least possible amount of physiological quantity, that is what Hahnemann is saying. When he says minimum dose, he says he means the least amount of
physiological quantity of drug that is to be given. And the third rule that he gave was, what was it? Infrequent repetition. Second thing was that you have to repeat the medicine as and when necessary. ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि ज्यादातर क्लासिकल होम्योपैथ्स दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ होम्योपैथी. ठीक है, in which Hahnemann had said that you just give one dose of a medicine, of a suitably selected medicine, and then you wait for 90, 60, 120 days till the dose exhausts its action before repeating. ठीक है, these are fourth edition guidelines. In fifth edition and in sixth edition, Hahnemann changed his guidelines, which nobody follows, not even the classical homeopaths follow. And the guidelines were that the medicine has to be given in liquid doses, and the medicine has to be repeated as and when necessary, at regular intervals till when. You don't have to repeat blindly. You don't have to repeat blindly. जैसे बहुत सारे LM practitioners जो LM potencies यूज करते हैं एक्सक्लूसिवली, वो क्या करेंगे? 0/1 दी, फिर उसके बाद 0/2 दी, उसके बाद 0/3 दी, उसके बाद 0/4 दी, उसके बाद 0/5 दी, देते जाएंगे. That is not something right. Hahnemann has not said that you have to repeat LM potencies or liquid solutions indefinitely without any consideration of the reaction that the patient is generating. What Hahnemann has said is that you have to repeat only till there is marked amelioration. Once there is a marked amelioration, be it with a single dose. It's not necessary. It depends. It varies from patient to patient. It varies from pathology to pathology. It varies according to the sensitivity of the patient. So there could be one patient on which just one dose of a 6C or a 30C, even in liquid solution, produces significant amelioration, and then you just stop that for further repetition of the medicine till the amelioration continues. And there could be other patients where the repetition is required for a very long time at regular intervals. As long as there is slow progressive amelioration, you continue repeating the dose. Okay? We will discuss how we prepare liquid solutions and how we repeat frequently in some other class. But for now, that is not the focus of the class. What we were discussing in general last time, this is just a brief summary of the focus. What Hahnemann has said about how the cure should be and how fast the cure should be. Hahnemann said that it's not necessary that the cure should be slow. The cure should be hastened as much as possible. These are Hahnemann's words. Hahnemann ये लिख के गए हैं कि क्योर जितनी जल्दी हो उतना अच्छा. उन्होंने ये कहा कि अगर कोई दवा 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन काम करती है, तो our aim should be to reduce the dose, reduce the duration of the treatment to as low as one quarter of that maximum possible duration. And we discussed that the maximum possible duration जो Hahnemann ने ऑफोरिज्म में लिखा है वो 100 days लिखा है, तो he says that it will be reduced to 25 days. Now these are just very general numbers. जो 100 दिन का कोई नंबर है, वो 25 दिन का नंबर है. कोई मरीज 25 दिन में ठीक होगा, कोई 100 दिन में ठीक होगा, कोई 200 दिन में ठीक होगा. But the underlying principle is, the guidelines are that we as homeopaths should make our effort to reduce the duration of treatment. And if you use your medicine judiciously, if you find the dose minimum, if you give minimum dose, if you repeat it at regular and well monitored intervals, then it's possible to reduce the treatment of duration significantly. We also discussed that to find the dose minimum, it's necessary to take the case forward. के बिना केस टेकिंग के आप मिनिमम तक नहीं पहुंच सकते. लास्ट टाइम हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे. So we will discuss another case of PCOS today to see how quickly the medicines work. Okay? Again, the follow-up is there for nearly whole 1 year, because in
cases, in chronic cases, we often need long follow-ups to see, to really assure that the case is cured. But we will see that as soon as the medicine was given, her menstrual cycle became regular. So लास्ट टाइम मैंने कुछ बातें नहीं बताई थी, एक जनरल आज हम पहले PCOS को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. PCOS is polycystic ovarian syndrome या polycystic ovarian disease. What happens in this condition is that there are multiple follicles maturing in both ovaries at the same time. Normally only one or two follicle matures and results in ovulation. In PCOS cases, normally multiple follicles start maturing at the same time. The exact cause of PCOS is not known, but PCOS is associated with increased male hormone in females. It is associated with increased cholesterol. It is associated with increased serum insulin levels. Right? ये तीन बेसिक चीजें हैं, और भी कई चीजें हैं जिनके साथ एसोसिएट होता है, पर तीन बेसिक चीजें आपको देखने को मिलती हैं. And what are the symptoms? The primary symptom or the primary complaint that a female comes when we get the diagnosis of PCOS is menstrual irregularity or facial hairs. दो चीज देखने को मिलती है. Because of the increased testosterone, there is masculinization. There is masculinization of the female, which includes increased body hair, in general thinning of breast, thinning of hairs, increased size of clitoris, husky voice, obesity especially abdominal obesity. ठीक है? These are some of the common features apart from menstrual irregularity that the patients come with. Another set of problems that a patient comes with when the patient is diagnosed with PCOS is unexplained infertility. When a female is unable to conceive and then we get a sonography done and then we find that the patient has PCOS. Now every female which has multiple cysts doesn't mean that she has PCOS, and not every female which has PCOS has multiple cysts in ovaries. There can be some exceptions to these cases. There are other causes, and sometimes even patients which are known to have PCOS, they come with absolutely regular menstrual cycle. But these are exceptions. The norm is that when a patient has PCOS, there will be multiple follicles in the ovaries, there will be menstrual irregularity, there will be subfertility, there will be increased body weight, there will be increased body hairs, and we often see in such cases that the cholesterol level is raised, insulin level is raised. These patients are very susceptible to hypothyroidism. These patients are very susceptible to insulin-resistant diabetes, which we see in cases which are not treated and which continue for very long duration. So this is a general pathology. Now we come to the treatment part. In conventional medicine, there is no good treatment. There is no specific treatment for PCOS. What they try to do is they try to reduce the male hormone, give fertility drugs to support ovulation in cases of subfertility and infertility, and at times try to reduce the serum insulin level artificially, and at times when the cysts are too much in number, they actually puncture these cysts individually. But none of these methods is curative. कोई इलाज तो नहीं हुआ, ये तो मेंटेनेंस हुआ. आप बीमारी को एड्रेस तो कर ही नहीं रहे, आप एक एक सिम्टम को पकड़ रहे हैं. सीरम इंसुलिन रेज हो रहा है या सीरम टेस्टोस्टेरोन रेज हो रहा है, that is not the cause. There has to be some cause why this whole hormonal changes have occurred in that female. Now that could be multiple things. What could be those multiple things? I will share some of these things with you, जो कि तुम्हारे को क्लिनिकल लाइफ में
मदद करेगा। We have to see that these PCOS and menstrual irregularity in females is now increasing at an epidemic rate, especially in India. What we see that it's now very common that young girls have irregular menses, and when we get a USG done, we often find multiple cysts in their ovaries, and often they don't have any families. PCOS runs in families also, and it could be purely acquired. We see a lot of acquired cases these days, and so we have to think what is causing these females to have PCOS. There are two things that are linked with PCOS. There is no concrete evidence, but people believe that it could likely cause hormonal disturbance. One is unsaturated fats. You know that fats are two times saturated and unsaturated. Saturated में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी होती है, unsaturated में नहीं होती है. Unsaturated फैट्स में क्या आता है? वनस्पति, डालडा, ठीक है, बेकरी के लिए जितना भी ऑयल यूज होता है, चिकन फ्राई करने के लिए KFC में जो ऑयल यूज होता है, जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जो ऑयल्स यूज होते हैं, प्राइमरीली यूज unsaturated fats, unsaturated oils. It has been linked, unsaturated fats have been linked with increased serum insulin, and they are also believed to affect the hormones in females, and it is believed that unsaturated fats can increase problem in cases of PCOS. So when we have a patient of PCOS, we have to make sure that the patient doesn't consume unsaturated fats. So उसका डालडा वनस्पति बंद कराना पड़ता है अगर वो खाते हैं. दूसरा कहाँ मिलेगा आपको डालडा वनस्पति? बेकरी के आइटम्स. जितनी केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, बेकरी का ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो उनसे ही बनता है. तो मेक श्योर दैट when you get a patient of PCOS, you very strictly tell the patient not to eat unsaturated fats. अगर आप उसको जल्दी ठीक करना चाहते हो, देखो हम जब दवा देते हैं ना, क्योर करते हैं, तो मेंटेनिंग फैक्टर को आपको हटाना जरूरी होता है. कई बार आप सोचो कि सिमिलिमम आपका सब काम करेगा, सिमिलिमम काम करेगा, लेकिन आपको चोट लगी, आप पट्टी बांधकर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसको हथौड़ा मारने से तो रोकोगे ना वापस. ये थोड़ी कि सिमिलिमम दे दिया तो हथौड़ा मारते जाओगे तो भी वो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा. आपको बाहर से अगर हथौड़ा मारना तो रोकना ही पड़ेगा अगर इस उंगली को ठीक करना है. तो अगर कोई चीज ऐसी है जो जिससे शरीर को हथौड़ा लग रहा है, then it needs to be stopped. ठीक है. Second thing which is much more dangerous these days is milk. Now you would wonder why milk would cause PCOD. What would milk do to your body that would cause PCOD? What is happening these days is, दूध पहले कैसे निकलता था? गाय का, भैंस का. गाय जाती थी, बछड़ा होता था, तब कुछ महीने गाय दूध देती थी. अब कैसे दूध निकालते हैं पूरा साल? ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा के. ठीक है. Huge amount of oxytocin is injected in dairy animals every day in India. Every day. सिर्फ 50 पैसे का एक इंजेक्शन आता है, एक बार जो एनिमल ऑक्सीटोसिन आता है, that cost only 50 पैसे. Although it is not allowed, even it is not allowed, लेकिन हर डेयरी में सब जगह लीगली अवेलेबल है, और हर डेयरी एनिमल को आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऑक्सीटोसिन का डेली इंजेक्शन लगता है. Now what oxytocin does? What oxytocin does? It is believed that oxytocin increases milk yield. Oxytocin is called the milk hormone. ठीक है ना? Oxytocin is, when is it secreted? Oxytocin is secreted at the time when labor starts. Why? It increases the cramping, it increases the labor pains, and it facilitates
delivering, and then it continues to be increased secretion during the lactation phase. Okay? And it is believed that it facilitates lactation. It increases lactation. But the fact is that it not just its role is not significant in increasing lactation. Its role is in ejecting, squeezing the loops. Yes, its role is in ejecting the milk from the breast and not increasing the milk yield. But that is not something that most people understand. Most people believe that oxytocin increases the milk yield. All it does is that it helps the milk to come out. It doesn't increase the milk yield significantly. But the poor animals in India, they are all subjected to this torture every day. Now think of this. When oxytocin is injected in these animals, what is happening is not only whatever is happening to their milk yield, they at the same time suffer from cramping pain just like labor every day. Think of those poor animals. They start wasting, they lose their fertility, and their life is just 3 years. जो गाय 8 साल 10 साल जिंदा रहनी चाहिए वो 3 साल में खत्म, दूध देना बंद कर देती है. But people are not interested कि वो साल में 4 महीने दूध दे. उनको तो 3 साल लगातार दूध दे दिया, हो गई केवल वसूली. But what is this doing to us? Large quantities of oxytocin is being passed, which is injected, is now passed into the milk. And that milk is drunk by us human beings. What does this do in human beings? It suppresses menses. It suppresses menses. ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है? पुराने जमाने में क्यों कहते थे कि बच्चे को दूध पिलाते रहो गर्भ नहीं होएगा? This was a part of natural way to prevent conception. कि बच्चे जल्दी नहीं हो, इसलिए पुराने जमाने में दाइयां कहती थी कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाओ. दूध पिलाते रहोगे तब तक तुम्हारा गर्भ नहीं ठहरेगा. The reason was जो लैक्टेटिंग हार्मोन्स जब तक निकल रहे हैं तब तक मेंसेस सप्रेस रहेगा, ओव्यूलेशन सप्रेस रहेगा, and you won't conceive. Now these states are being created artificially because of this huge amount of oxytocin that we are consuming every day. But nobody knows. But as doctors we know and we understand this phenomenon. So when a patient with PCOS comes to your clinic, make sure that you stock all milk and milk related products, not just milk. Doodh, dahi, chaach, lassi, paneer, cheese, absolutely band karo. And you will see a dramatic change. You will see a dramatic change. Even with आप ये 2 चीज बंद करके देखो, I guarantee you आप दवा नहीं भी दोगे ना तो you will see that patients start improving. It might not become absolutely normal because there might be other factors. ठीक है? But you will see significant change and your medicines will work much faster if you follow these things. So ऐसे patients जिनका कोई इलाज नहीं है, जो सारी उम्र परेशान रहते हैं, लाखों रुपए की लेजर या रिमोट थेरेपीज लेते हैं, लाखों 10 लाखों रुपए इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे खर्च कर देते हैं. अगर उनकी पीरियड्स आप 1 महीने में रेगुलर कर दो तो is it quick or is it slow? Is it quick? Could there be anything quicker than it? नहीं. Who says homeopathy works? We discussed the case of PCOS last month also, in the last class also, where the periods were regulated in just 1 month and they continued to be normal for the whole year that we had a follow-up. Now we will discuss another case. Different, same pathology, different patient, different set of symptoms, different remedy. Okay? And yet, same result. Same result. So here this patient was aged 22 years old. Obviously she was a female. Occupation was student. The chief complaint was
irregular and delayed menses, and the patient came with a diagnosis because more often the patients come to us after visiting a gynecologist, seeing that nothing much would be done, and then they come. So the patient came with a diagnosis of PCOS, had irregular menses. What were the symptoms? What symptoms did the patient give? The patient said that the menses were irregular and delayed since menarche. जब से पीरियड शुरू हुए हैं तब से इरेगुलर है। अभी एज क्या थी? 22 साल। अभी 22 साल है और menarche हुई थी at the age 14. She started menstruating at the age of 14 and today she is 22 years old. Today she is actually 23 years old because this case is more than 1 year old. But 22 साल की एज में यानी 8 साल से irregular periods चल रहे हैं उस लड़की को। What are the symptoms that really gave? Sometimes the periods were protracted. होते ही नहीं है, होंगे 2 महीने में, 3 महीने में होंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब होते हैं तो 10-15 दिन तक बंद नहीं होते, पर कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। और डिस्मेनोरिया रहता है थोड़ा सा जब पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स के पहले 2 दिन पेट में दर्द रहता है। यूएसजी लेके आई थी अपनी, यूएसजी showed multiple cysts in both ovaries. The last menstrual periods. Now this patient came to me on 9 January. This was the first consultation. Luckily the patient had her period just before that. LMP क्या थी इसकी? 30/12/2010. That means this time these periods were before the treatment started, but prior to that the periods were irregular. यानी अभी तो हुए पर उससे पहले वही 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना में होते थे। So you see कि अब इसके बाद क्या होता है? What happens after the medicine is given? There were some other symptoms like the patient had pain in left side of chest since 1 month, and which was worse by standing. There was occasional headache. Headache was temporal and it was worse by stress. Family history, PCOS के केसेस में फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है। तो फैमिली हिस्ट्री लेना ऐसे केसेस में बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर फैमिली में मैटरनल आंट्स को या पैटर्नल आंट्स को सिवियर हिस्ट्री नहीं हो रेगुलर मेंसेस की, तो प्रोग्नोसिस थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है। ठीक है, ऐसे केसेस को जहाँ पर जेनेटिक हिस्ट्री होती है वहाँ थोड़ा सा ट्रीटमेंट कई बार लंबा चल जाता है, थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है then it becomes much more easier to treat because then it's a purely acquired case. ठीक है, now here we took the family history and we found that the maternal aunt यानी मासी had irregular and delayed menses. ठीक है, so we become a bit cautious if there is some family history of similar complaints in the family. Now we took the past history and in past history we found that there were febrile hits in childhood. बचपन में febrile fits आते थे, convulsions आते थे बच्ची को, and they started after a head injury. ठीक है, बचपन में कभी सर पे चोट लगी थी, उसके बाद जब भी बुखार आता था तो convulsions आ जाते थे। So this was the basic case, जो symptoms जो presenting complaint थी, patient को और कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ सिर्फ एक थी irregular menses, और कोई symptoms नहीं थे। बाकी पेशेंट को एज सच कोई सिम्टम्स नहीं थे। ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं? रिलेटिवली वन साइडेड केस, कि जहाँ पर पेशेंट को कोई मार्क्ड सिम्टोलॉजी नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेके आ रहा है एंड देन यू हैव टू ट्रीट इट क्लासिकली। देन इट बिकम्स अ चैलेंज। हाउ डू यू ट्रीट सच केसेस क्लासिकली? हाउ डू यू फाइंड द सिमिलम? बिकॉज़ वी सॉ दैट फाइंडिंग द सिमिलम इज द फर्स्ट बेसिक criterion, first basic necessity to treat the patient quickly. ठीक है, so we try to, when we don't have symptoms, then we move on to find the person. We try to understand the patient as an individual. We try to find the generals, the physical generals, the mental generals.
So we asked the patient about the generals. The patient had profuse perspiration. Okay? The thermal was hot, thirst was low, appetite was good, and there was aversion to rich and spicy food. These were the generals. The perspiration was profuse, thermal was hot, thirst was low, appetite was good, and there was aversion for rich and spicy food. We took the mentals also. The patient was very emotional, very sensitive. Okay? Would cry if somebody said anything to her. मुझे कोई कुछ बोल दे तो मेरे आंसू निकल आते. ठीक है? What rubric we take? We do disposition. कि जरा सी बात हो गई और होना चाहिए. मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है. मुझे हमेशा लोग चाहिए मेरे साथ. ठीक है? क्या रूब्रिक लेंगे, क्या सिम्टम लेंगे? डिजायर फॉर कंपनी. एक बड़ा और जब उनके सपने पूछे, फियर्स पूछे, एप्रीहेंशंस के बारे में पूछा तो एक बड़ा रेयर सा सिम्टम पकड़ा, चूहे से बड़ा कर दिया. फियर ऑफ माउस, फियर ऑफ माइस. द पेशेंट आल्सो हैड ड्रीम्स ऑफ माइस. ना केवल चूहों से डर लगता है, चूहों के सपने भी आते हैं. There were also dreams of ghosts, fear of darkness, dreams of falling from a height, dreams of saving others, dreams of trying to save others. और ये चीज आप ध्यान रखना कि जब पेशेंट, जितना पेशेंट एंशियस नेचर का होता है, जितना पेशेंट इमोशनल और सेंसिटिव नेचर का होता है, they have a tendency of very visual, very vivid dreams, and they dream much more than normal people. So here we see that this female was very emotional, very sensitive, very easily affected by what others said to her, and you will see that she has very vivid dreams. अब हम क्या सिम्टम्स देंगे इस केस में? What symptoms are we going to take? Where should we start from? Puberty से start होगी. Puberty से start हुई है, चलो तो मेलास्मा के वक्त में नॉर्मल हुई नहीं. One symptom is irregular menses. ठीक है? Should we take it? Irregular menses. Is it common or is it characteristic for the disease to the patient? Common से शुरू करते हैं. What characteristic do we have? Symptoms तो हमारे पास कुछ थे नहीं characteristic. जनरल्स में जाए, ठीक है? अच्छा, क्यों हमारे को हिस्ट्री मिली थी ना, हमको बचपन में हेड इंजरी की हिस्ट्री मिली थी. Should we take it? Febrile convulsions, history of febrile convulsions, history of head injury in childhood. Should we take it? क्यों? Why should we take it? Do we see any correlation between this and that? If there is no correlation, if that was there then, it's not now. हिस्ट्री ही अब नहीं है, बचपन में आते थे. But sir, if you find a remedy which covers that symptom also, then it will be like beneficial for this case. अगर कोई remedy हमें मिल जाती है, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है. But we cannot start from something of which we are not sure. We really don't know whether the head injury resulted in convulsions. Febrile convulsions इंसिडेंटल भी हो सकते हैं. तो उसको कोरिलेट कर लिया पेशेंट ने कि चोट लगी थी सर में इसलिए कन्वर्जन्स आ रहा है. हकीकत ये है कि बच्चों में फेब्राइल कन्वर्जन्स अक्सर आते हैं. So we are not very sure of the etiological significance of that head injury. So when we are not sure, आपको जब ट्रीट करना है पेशेंट को तो आप
गेस वर्क पे नहीं ट्रीट करोगे। आप शुरुआत कहां से करोगे? समथिंग विच इज सॉलिड, जहां पर इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन मेरा, तुम्हारा, इसका, इसका, इसका सबका वेरी कर सकता है। इसलिए जब दवा ढूंढनी शुरू करो तो वहां से शुरू करो जहां पर यू हैव रॉक सॉलिड इंफॉर्मेशन, जहां पे मेरा, तुम्हारा, इसका और इसका इंटरप्रिटेशन अलग नहीं है। हमसे लोग हमेशा ये पूछते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं, सर ऐसा क्यों होता है कि 10 होम्योपैथ में सब अलग अलग दवाई निकालते हैं, एक ही मरीज की दवाई अलग अलग निकालते हैं, अलग पोटेंसी देते हैं, क्यों? होम्योपैथी में प्रॉब्लम? मैं कहता हूँ होम्योपैथी में प्रॉब्लम नहीं है। द वे वी आर टॉट टू अप्रोच अ केस, द वे वी यूज इंफॉर्मेशन, हेल्थ तो लिख के गया है कि आपको क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, वो तो लिख के गया है कि आपको कॉमन लास्ट में कंसिडर करो, हम कॉमन पहले कंसिडर करते हैं। हेल्थ तो लिख के गया है कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। हेल्थ ये लिख के गया है कि आप ऑब्जर्व करो, आप अपने सारे सेंसेस काम में लो, आप चीजों को रिसीव करो, लेकिन उनको जज नहीं करो। जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है केस के लिए, सबसे पहले उसको यूज करो। ठीक है, अब हमारे पास रॉक सॉलिड इंफॉर्मेशन क्या आती है इस केस में? जो जनरल्स हैं हम उनको पकड़ के चलते हैं। जनरल्स क्या है हमारे पास? जो हमारे को सबसे ज्यादा +3 सिम्टम्स मिले जनरल्स में, हमको मिले प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन। ठीक है, patient had profuse perspiration, then thermal is hot, then the patient had low thirst, and then एक सपना जो उसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक था, उसको फील तो था माउस का, और उसमें जो सपना जो सबसे ज्यादा इंटेंस आता था वो था गिरने का। देखो, अगर किसी चीज से डर लगता है और उसका सपना आए तो वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक है, बट देन आप उस डर से, चूहे से, छिपकली से, कॉकरोच से, हर दूसरी लड़की डरती है, हर दूसरी लड़की डरती है, और वो डर अगर थोड़ा सा ज्यादा है और उस चीज को आप सपने में देख लो तो वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सपने में वो चीज दिखे जो कि आपकी लाइफ में आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाओ, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। रिपीटेटिवली कोई सपना आ रहा है, इंटेंसली आ रहा है, और कहीं वो आपके सबकॉन्शियस को इनडायरेक्टली डिनोट कर रहा है, कहीं आपकी स्ट्रगल को डिनोट कर रहा है। व्हाट वुड इट डिनोट? फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, इट कुड मीन लॉट मेनी थिंग्स। फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट मीन्स you are trying to reach to a goal, you are unable to reach there, and just before reaching there you fall. It could be one interpretation. Another interpretation of it could be that falling from grace, falling from the eyes of someone, losing the respect. What you are doing, you are falling from a height. So what is height? आप नजरों में किसी को ऊपर रखते हो ना, वो भी तो हाइट है। तो किसी की इज्जत कम हो जाए, किसी को डर हो मन में कि मैं कहीं रिस्पेक्ट लूज नहीं कर जाऊं, कंपटीशन से हार नहीं जाऊं, मैं अपनी को फर्स्ट पोजीशन से हार नहीं जाऊं। Even such people can have such dreams where they see they are falling from a height. पर हमको इस चीज को इंटरप्रेट नहीं करना। ठीक है, अगर हमारे को पेशेंट वहां लीड कर जाता है, अगर हम उसको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सके उसकी लाइफ से, देन इज गुड। अपने को अपना दिमाग नहीं लगाना है, इंसान ये हुआ होगा तो ये शायद ऐसा सपना नहीं, नो पर्सनल इंटरप्रिटेशन। अगर पेशेंट तुमको लीड करता है उस सपने के मतलब तक तो वेल एंड गुड, देन इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। पर पेशेंट अगर लीड नहीं कर रहा तो अपना कयास लगाने की जरूरत नहीं है कि उस सपने का क्या होता है। बट इफ इट इज इंटेंस एंड इफ इट इज देयर इन रिपर्टरी, देन वी यूज इट। ठीक है, सो वैसे केस बहुत क्लियर है, बहुत कोई बहुत रेयर कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है, और जनरल्स देखिए शायद आप समझ गए होंगे क्या प्रिस्क्रिप्शन होगा। What we get here is
The remedies that cover all these 4 symptoms are pulse, milk, china, lycopodium, mercosol, phosphoric acid, and sulfur. Puja is also there. These are the remedies. Okay? Now, out of these remedies, we have to see इनमें से सबसे ज्यादा बाकी सिम्टम्स कौन सी दवाई कवर कर रही है. आप इसमें वीपिंग डिस्पोजिशन ऐड कर दो, ठीक है, सेंसिटिव इमोशनल नेचर ऐड कर दो, आप बाकी भी जो इसके मेंटल सिम्टम्स हैं, जनरल केन की रिपर्टरी में और इवन नई ब्लॉक के रिपर्टरी में आपको फियर ऑफ माउस में पल्स नहीं मिलेगी. एक्टिया में तो डिल्यूजन है, इट्स नॉट फियर. एक्टिया में डिल्यूजन है दैट द पेशेंट सीज द माइस रनिंग अंडर हर चेयर. एक्चुअल फियर ऑफ माइस और ड्रीम्स ऑफ माइस आपको सीपिया में लिखा हुआ मिलेगा और भी कुछ दवाओं में है. लेकिन अगर आप रिसेंट कंप्लीट रिपोर्टिंग देखते हो लेटेस्ट वर्जन, तो यू फाइंड पल्स मेंशन्ड इन फियर ऑफ माइस आल्सो. Actually there are 2 rubrics. One is fear of mice and another is fear of rats. क्या फर्क होता है mice और rats? जो घर में जो चूहे होते हैं, जो ह्यूमन पॉपुलेशन के आसपास होते हैं, they are usually called mouse या mice. और जो फील्ड में होते हैं, जो बड़े चूहे होते हैं, they are usually called rats. तो क्या दिखता है, कैसा चूहा दिखता है, ये भी पूछना पड़ता है. किस साइज का चूहा दिखता है भाई, क्या कर रहा है चूहा तुम्हारे को, ठीक है. So in this case, because of the symptoms were very clear, the state of the patient was very clear, the mentals of the patient were very clear, and the thermals and the generals, physical generals also strongly pointed towards this remedy. I had no hesitation in prescribing this remedy. So the prescription was not something out of this world, but the understanding of the case is necessary. Now you see this case, this remedy also covers irregular periods, but we did not start from there. We can confirm using them. Now we can confirm out of these remedies. Does Mel has that? Melatonin आ रही थी ना, चाइना आ रही थी ना, पूजा आ रही थी ना. क्या मेलाटोनिन में, चाइना में, मर्क्सोन में ऐसे पीरियड्स हैं? नहीं. So, इस स्टेज पे आप लोग कॉमन सिम्टम्स को यूज करो कंफर्म करने. वहां से शुरू नहीं करो, वहां से शुरू नहीं करो. आखिर में कंफर्म करना है ना अपने को कि उसकी पैथोलॉजिकल अफिनिटी है क्या, जो हम दवाई चूज कर रहे हैं उसकी पैथोलॉजिकल अफिनिटी है, उसकी टिश्यू अफिनिटी है, वो कॉमन सिम्टम्स भी कवर कर रहे हैं या नहीं. बट वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन, वी स्टार्ट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक. वी यूज द कॉमन ओनली इन द एंड टू फिल्टर कि वो जो दवा है हम चूज कर रहे हैं क्या उसकी पैथोलॉजिकल अफिनिटी है, क्या वो कॉमन सिम्टम्स भी कवर करती है उस पैथोलॉजी के. अगर आपकी सिमिलर है तो यूजुअली कवर करेगी, यूजुअली कवर करेगी. अंडर प्रूव्ड रेमेडी है तो हो सकता है कभी कभी नहीं करे, सिम्टम्स प्रूविंग प्रॉपर नहीं होती है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वेल प्रूव्ड मेडिसिन आ रही है तो वो कवर करेगी. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप दवा ढूंढ रहे हो इरेगुलर पीरियड्स की और आपके मेंटल्स के बेस पे आप दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हो फ्रीक्वेंट पीरियड्स की. देखो बहुत मेजर ब्लंडर होता है कि आपने सिर्फ मेंटल्स देखे और आपने दवा ऐसी प्रिस्क्राइब कर दी जो कि मेंस्ट्रुअल डिलेड मेंसेस की जगह फ्रीक्वेंट मेंसेस आ. ओके, सिम्पटम्स है. दिस शुड नॉट बी हैपन. ठीक है, तो हम जो कहते हैं ना, अगर आप सब केस हर इंसान लॉजिकली और मैथमेटिकली केस को असेस करे, then you won't reach 10 different prescriptions. Then you won't reach 10 different prescriptions. When we reach 10 different prescriptions, अरे PCOS का केस है, तुझे टेलिंग मिला होता है. दूसरा कहेगा पल्सबिला दे दो, तीसरा कहेगा बैक्टीरिया का आप दे दो. अरे हेड इंजरी का सिम्पटम था इसमें नेट्रम साल्व पहले देंगे अपन इसको.
अरे फिब्राइल कन्वर्जेंस से भैया इसको पहले यूट्रोमेट से केस शुरू करूंगा मैं। Who are you to judge? Who are you to judge? You are nobody to judge what you have to prescribe. It is the patient which will tell you what he or she needs. You have to listen to the patient attentively. You have to take note of the symptoms attentively. And if you do that very sincerely, then there is no question that you will reach 10 different prescriptions for the same patient. You will definitely reach the same prescription. तो एक आध गलती हो सकती है। अब यहाँ गलती क्या हो सकती है कि मान लो मैं I start with dreams of house, बस देखी नहीं उसमें आपको ज़्यादा करने से। Then what would have to be prescription? CPR is chilly remedy. न thermal match कर रहा है, न perspiration match कर रहा है, न thirst match कर रही है। What would have happened? So जरूरी ये है कि दवा ऐसी हो कि मेजॉरिटी जो कंफर्म वाले सिम्टम्स है वो ज्यादातर कवर करनी चाहिए। एक रेयर सिम्टम कवर करे ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो एक रेयर भी कवर करे तो बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ एक रेयर करे और 9 जो कॉमन स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है जनरल उनको इग्नोर करो, नींद मजबूत होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन की। So what happens to this case after this? Last time we have discussed cases which we had treated using liquid solutions. Here, since the case was very clear and the patient was very sensitive, I did not feel the need of very frequent repetition. I felt that just 1 or 2 doses of the right similar would do the job. So 9/11 को हमने इसको पल्सिटिला 10 का एक डोज दिया with PL for 1 month. ठीक है? What happens after that? The next follow-up was on 6th Feb. Consultation कब थी? 9 जनवरी। 9 जनवरी के बाद सेकंड कंसल्टेशन आई, 6 Feb. पेशेंट को क्या था? एक सिम्टम था, चेस्ट में पेन था लेफ्ट साइड, ठीक है? हमने उसको देखा भी नहीं उसकी तरफ। क्यों नहीं देखा? Because that was an acute complaint. सिर्फ एक नहीं ले सकी। When we are treating for a chronic case, we don't mix acute and chronic symptoms. We never mix acute and chronic symptoms. Acute treat कर रहे हो तो सिर्फ acute के symptoms को, chronic treat कर रहे हो तो सिर्फ chronic के symptoms। ठीक है? वो कोई मस्कुलर पुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Unless and until it is related with the chronic, we don't mix the symptoms. Yet the patient said it could have been acute which resolved on its own, or the medicine was working in general on that patient's own. The patient said that the chest pain is gone, and the patient had the next periods on 29th January. The periods lasted for 5 days at normal flow. Okay? So first period absolutely on time. Prescription was on 9th January. Second follow-up was on 6th. This was first follow-up on 6th. The second follow-up was on 6 March. 6 March को there was no chest pain. The next periods came on 28th Feb. Menses lasted for 4 days. Prescription was, here also the prescription was PL for 1 month. Again PL for 1 month. Next follow-up 18/4. No complaint. There was one more change that now she doesn't panic on seeing. हमने कंसीडर नहीं किया था सिम्टम, पर अब पहले जैसा डरने लगा। ठीक है? ड्रीम्स पहले की तरह बहुत विविड नहीं है, बहुत रिपीटेटिव नहीं है। देखो वहाँ पर भी मेंटल एंजाइटी लेवल और सेंसिटिविटी कहीं कम हो रही है, which indicates
माइंड जब रेस्टफुल होता है, अच्छी गहरी नींद लेता है, तो सफरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। सो इट शोज कि कहीं उस लेवल पे भी पैथोलॉजी रिलीव हुई है। एलएलपी वॉज 1/4/2011, अगेन पीरियड्स लास्टेड फॉर 1 month, PN for prescription was placebo for 1 month. So what we see, एक महीने पे आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। आगे का देखिए फॉलो 17/5 तो नेक्स्ट फॉलो अप। Here we see complaints कुछ नहीं है, मेंसेस में डिले हुए हैं। कब आने चाहिए थे? 1 अप्रैल को हमने यहाँ देखा पीरियड्स लगभग टाइम पे थे। 1 मार्च के आसपास, 1 मई के आसपास आने चाहिए थे। पेशेंट हमारे पास 17 मई को आ रहा है, ठीक है, तब पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं। पीरियड्स जो कि डिले हो गए थे, I felt there might be a need for repetition. So on 17/5 we repeated again once 10 and 1 dose, ठीक है, and we gave PN for 2 weeks. उसके बाद नेक्स्ट कंसल्टेशन की पेशेंट की 30/5 को 2 हफ्ते की दवाई दी ना, 30/5 को दवाई दी। पेशेंट ने आके कहा कि 19/5 को उसको पीरियड्स आ गए, यानी टोटल डिले कितना रहा यहाँ पर? 2 हफ्ते का, ठीक है। उसके बाद 30/5 को हमने कहा कि जो पीरियड्स 5-6 महीने से रेगुलर चल रहे हैं, इसकी सोनोग्राफी करा लेते हैं। तो हमने पेशेंट को 30/5 को सोनोग्राफी एडवाइस करी। नेक्स्ट कंसल्टेशन में देखो 30/5 को नेक्स्ट कंसल्टेशन थी 1 जुलाई 2011। पीरियड्स आए 19/5 के बाद 24 जून 2011। 30 जून को पेशेंट ने सोनोग्राफी कराई and sonography showed no system. Okay, 6 महीने का follow-up। This case is still under treatment. हालांकि I am not giving any medicine to her. But what you see is कि हमने पहली दवाई जब पहला डोज दिया, उसके बाद से जिस लड़की को पिछले 8 साल से एक भी महीना रेगुलर पीरियड्स नहीं आया, उसको पिछले 8 महीने से रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। Is it something big or small? Is it quick or slow? What else? And not just the symptoms have disappeared, the cysts have also disappeared. Now her ovaries have no cysts. Okay? So this was a case of PCOS. Any questions related to this case? So oxytocin वाला आपने बताया था कि we are taking oxytocin in medicine. What's the exact effect of oxytocin and how we can correlate with this cyst? देखो oxytocin suppresses menses, ठीक है ना? So this is just a hypothesis. This is not scientifically proved. But since we know what is the role of oxytocin in normal females, we can correlate it, and we have seen it clinically also. We have seen it in numerous females that once they stop milk intake, the periods start becoming pain. Okay. So, shall we take another case? Yes. एक और अपन केस डिस्कस करते हैं। एक और बीमारी, मिलाज्मा। You understand what is melasma? Melasma? Melasma समझते हो क्या होता है? Blackish brownish जो छाइयाँ जिसको हिंदी में बोलते हैं, छाइयाँ समझ में आता है? कॉमन टर्मिनोलॉजी
जो पुराने मेडिकल लिटरेचर में थी वो क्लोजमा थी। आजकल जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड मिलास्मा। मिलास्मा कम्स फ्रॉम मिलानिन, ठीक है। पहले जमाने में इसको क्लोजमा बोलते थे, हमारे ज्यादातर होम्योपैथिक लिटरेचर में आपको क्लोजमा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जो डिस्कलरेशन हो जाता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, या कई बार वैसे भी हो जाता है हार्मोनल इरेगुलरिटी की वजह से, यूजुअली बटरफ्लाई काइंड ऑफ नाक, नोज ब्रिज, cheeks and just over eyebrows. These are the common places where we see a dark brownish discoloration. Sometimes it is so dark that it starts appearing blackish. और normal belief ये है कि once it occurs, it never goes. General belief is that melasma once it occurs, and especially if it is old, काफी टाइम से अगर melasma है तो कभी ठीक नहीं होता। और आप होम्योपैथ के पास भी जाओगे केस लेके तो कहेंगे इसमें तो बहुत लंबा टाइम है। स्टैंडर्ड लाइन है कि इसमें तो बहुत लंबा टाइम लगता है, मतलब दवा खाते जाओ, कितने दिन, बस खाते जाओ। अरे कोई तो टाइम बताओ, अरे बस खाते जाओ ना, धीरे धीरे काम करेगा। अच्छा होम्योपैथी तो धीरे धीरे करो। हाँ देखा। So here we will discuss a case जहां पर मिलास्मा भी ऐसे ठीक हुआ। कैसे ठीक हुआ? पेशेंट थी 25 साल की, फीमेल पेशेंट, प्राइवेट जॉब कर रही थी, रिलीजन मुस्लिम, चीफ कंप्लेंट मिलास्मा। अब मैं नॉर्मली कभी रिलीजन मेंशन नहीं करता अपने केसेस के साथ डिस्कस करते वक्त, बट इन दिस केस आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग दैट शी वाज मुस्लिम एंड देयर इज रीजन जो अभी हम आगे बात करेंगे। So here this patient came to me with melasma which was on her nose and cheeks. The melasma was there since 2 years. It started on nose bridge. The girl was unmarried. Okay? Normally we see melasma occurs during pregnancy or immediately after pregnancy. Females develop melasma. Here this girl was unmarried. I took the history properly. I asked her if she had ever taken a lot of hormonal treatment for anything or OCPs for anything. There was no such history. What was interesting in this particular case was there was no other symptom. Again another one-sided case. The doctor साहब मेरे को झाइयाँ ठीक कर, ठीक है? अब झाइयाँ ठीक कर दो, कैसे ठीक कर दो? कुछ सिम्टम तो चाहिए। What remedy should I prescribe? सल्फर प्रिस्क्राइब करूँ, CPR प्रिस्क्राइब करूँ, लाइकोपोडिन प्रिस्क्राइब करूँ, कॉन्सेप्टिला प्रिस्क्राइब करूँ, क्या प्रिस्क्राइब करूँ? I need something to prescribe. Menses, no complaints. Sleep, अच्छी बढ़िया गहरी नींद आती है। पसीना ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं। पानी अच्छी प्यास लगती है, बढ़िया लगती है। भूख भी अच्छी लगती है। खाने में क्या अच्छा लगता है? चटपटा अच्छा लगता है डॉक्टर साहब। केस हुआ। How do you prescribe for such a case? In this particular case, it was the mannerism of the patient that led me to the remedy. Despite being a Muslim girl, she always came dressed in a very hip fashion. Shorts, tight t-shirts, angles, chains, sleeveless. और ऐसा नहीं है कि she was living in Rajabad. She used to live in Jodhpur. ठीक है? And how she behaved. अरे डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ फिक्र ही नहीं। आप तो पता है ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मैं तो पता है ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, पता है आपको ये पता नहीं डॉक्टर साहब मजा आ जाता है लाइफ का। क्या बताऊँ मैं आपको डॉक्टर साहब, ये हो जाता है। मैं तो बस यहाँ काम करती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, मैंने इसमें ये क्रीम लगा ली, वो क्रीम लगा ली। अरे यार आपको पता ही नहीं है, मैं सब कर चुकी हूँ डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके इसको बस ठीक कर। She was like this. ड्रेसिंग ऐसी,
और बात करने का अंदाज ऐसा कि जैसे मेरे से तो पता नहीं उसका कब की जान हो जाए। फर्स्ट कंसल्टेशन, अरे यार डॉक्टर साहब आपको तो पता ही नहीं, बस मैं इतनी कोशिश कर चुकी हूँ, आप कुछ भी करें ठीक है। This was the expression of the patient. This was the way patient communicated with me. कि जैसे मुझे पता नहीं कब से जानती हो, मेरी पुरानी दोस्त हो, और बार बार अच्छा बात पेशेंट से जब मैं बात कर रहा हूँ किसी चीज में कोई चिंता कोई फिक्र, कुछ आप पूछते हो ना केस स्टडी में, जब कुछ नहीं मिल रहा होता है तो आप स्पेसिफिक्स पे कुछ जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं भाई, इसका तुम्हारे को इससे कैसे डील करती हो, लोग कुछ कहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई चिंता नहीं, हर चीज के लिए ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई चिंता नहीं। एट द सेम टाइम ठीक भी कर दो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई चिंता नहीं। अब दिस वॉज द केस। कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना हमको, मिलाजमा कैरेक्टरिस्टिक है या कॉमन है? कॉमन है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका? बिहेवियर, उसका मैनरिज्म, उसका वे शी कम्युनिकेटेड। हमारे को 4 रूब्रिक्स मिले। पहला, वेरी टॉकेटिव, नॉन स्टॉप बोल रही। दूसरा, वेरी फ्रेंडली, ऐसे मुझसे बात कर रही है जैसे मुझे पता नहीं कब से जानती है। तीसरा, कंटेंटेड, रूब्रिक को मैंने लिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूं जैसी हूं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं जैसी हूं मैं खुश हूं। जब आदमी संतुष्ट होता है, जैसा है उससे खुश है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटेंटमेंट, कि जैसा हूं मैं संतुष्ट हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड, कंटेंटेड। एंड मुझे कोई चिंता नहीं होती, मुझे कोई फिक्र नहीं होती, मुझे किसी बात का कोई असर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। The rubric is carefree। ठीक है, 4 हमने। अब टॉकेटिव रूब्रिक नहीं है, फ्रेंडली, कंटेंटेड एंड केयरफ्री। ये हमारे को जनरल उसकी जो हमने एनालिसिस किया, उसकी जो चीज सामने निकल के आई कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने इन 4 सिम्टम्स को देखकर फ्रेंडली भी नहीं किया हमने एक बार रूब्रिक रिकॉग्नाइज करते वक्त, हमने सिर्फ 3 रूब्रिक्स लेकर केस को रिकॉग्नाइज किया। एंड व्हाट वी गेट इज लोकेसिटी, केयरफ्री और कंटेंटेड, तीनों रूब्रिक्स हैं। ठीक है, दवाइयां हमारे पास आई, ओपियम, फॉस्फोरस, टेरेक्सिकम, जिंकम, बोरेक्स, ऑरल, पॉपुलस, नेचुरल कार्ब एटसेट्रा। अब इनमें से ओपियम, फॉस्फोरस, टेरेक्सिकम, जिंकम, बोरेक्स, ऑरल, नेचुरल कार्ब, पॉपुलस, हमको ऐसी दवाई चाहिए, हमारे पास 2 रूब्रिक्स और है, 1 फ्रेंडली एंड सेकेंड डिजायर फॉर salty spicy food and moderately good thirst। 3 चीजें और थी हमारे पास। अब आप इन तीनों चीजों को और ऐड कर दो, दवा क्या निकल के आएगी? फॉस्फोरस। ओपियम is much more contented than phosphorus, लेकिन ओपियम नहीं लेंगे क्योंकि ओपियम के कंटेंटमेंट डिफरेंट होता है। ओपियम का कंटेंट में जब आदमी को कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, ओपियम को हम कहते हैं कोमा में यूज करते हैं, इंसेंसिटिवनेस, जहां उसको जरूरत महसूस ही नहीं,
सो वहां पे वो कंटेनमेंट अलग करेगा और यहाँ पर कंटेनमेंट बेफिक्री का, एक जरूरत नहीं महसूस होने वाला कंटेनमेंट अलग और एक बेफिक्री वाला कंटेनमेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसमें जो कौन सी दवाई ऐसी है इनमें से जो कि सबसे ज्यादा फ्रेंडली है, बबली है, टॉकेटिव है, जिसमें सॉल्ट की डिजायर है, थर्स्ट सिग्निफिकेंट है, the remedy is phosphorus. अब what happens, हमने इसको कब प्रिस्क्राइब किया और क्या प्रिस्क्राइब किया? पहला प्रिस्क्रिप्शन हमने इसको 20/9/2010 प्रिस्क्रिप्शन was phosphorus 30 liquid solution for 2 weeks. ठीक है, the next consultation was exactly after 2 weeks, 5-10-10. The patient reported there is an amelioration in melasma. How much amelioration? +1. +4 यूज करता हूँ मैं, 4+ यूज करता हूँ रेंज के हिसाब से, 25% है तो +1, आधा है तो +2, 3/4 है तो +3 और पूरा लगभग ठीक है तो +4। अब पेशेंट कुछ फायदा है, ठीक है, कुछ फायदा है तो हम वापस उस दवा को रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ड्रामेटिक नहीं है, स्लो प्रोग्रेसिव है। ठीक है, अब हमने रिपीट किया, नेक्स्ट कंसल्टेशन ये रिपीट वाज ऑन 26 sorry, there is some mistake. 26/10. Next was on 26/10 and the patient showed +++. 4 हफ्ते 75% melasma which was present since 2 years, for which she had applied all creams or ointments. In just 4 weeks, 75% melasma was gone. What we did, sorry, उसके बाद का एक और फॉलोअप जो है यहाँ पे दिखा रही है, एक बार और देखा पेशेंट को, उसके बाद यहाँ पर क्लियरली, because now the result was significant, what we gave was PM, 15 दिन की PM और दी, उसके बाद मैंने उसको कोई दवा नहीं दी, she was 100%. 2 साल का melasma vanished totally in 6 weeks. She still comes to me for her brother. ऐसा नहीं कि उसके बाद मैंने फॉलोअप नहीं है मेरे पास, 8 महीने बाद का भी फॉलोअप है, बट देयर इज नो ट्रेस ऑफ दैट melasma ever coming back. तो जिस melasma को हम कहते हैं कि बहुत धीरे ठीक होता है, बहुत देखो हमने 3 चीजें करी यहाँ पर। पहला चीज सिमिलर, दूसरा चीज मिनिमम क्वांटिटी, पोटेंटाइज्ड ड्रग, थर्ड चीज repetition using liquid solutions which Henry has recommended. What was the result? जो चीज सालों में ठीक होती है, जिसका इलाज महीनों सालों चलाते हैं होम्योपैथ, in 6 weeks time it was absolutely not even a speck remained on the case. And these are all live cases. ऐसा नहीं कि शायद कभी आशीष ने देखे हो केसेस, मैंने देखे हैं साथ में के केसेस, so these are not cases that I cannot show you. Most of these cases में शायद पेशेंट को बुलाऊंगा तो वो आ जाएंगे। So जैसे इस केस में डिमीनर पे हमने पेशेंट की दवाई निकाली, कल भी हमारे पास एक अच्छा सा केस आया था हिंडोस का, नाइजली वाज देयर। एक 34-35 साल का आदमी आया हमारे पास, थोड़ा सा शैबी लुकिंग, बाल झड़ गए, टिपिकल मेल पैटर्न बॉल्डनेस, यहाँ से हेयर लॉस हुआ था और यहाँ से तो हो चुका था और यहाँ से थिनिंग हो गई थी। अब बात करी उससे, कोई सिम्टम नहीं, नॉट इवन वन सिम्टम, सब पूछ लिया, ना फिजिकल जनरल मिल रहा, ना मेंटल जनरल मिल रहा, ना कोई सिम्टम, बस मेरे बाल गिर रहे।
अब बाल गिरने वाले मरीज आके तो या तो मरीज को टेंशन हो जाती है मुझे देखकर, या मुझे टेंशन हो जाती है। तो ये कॉन्फिडेंस होता ही नहीं कि डॉक्टर ही गंजा है तो हमारा क्या इलाज करेगा। तो अब उसका इलाज करना भी जरूरी। अब आपसे कोई फेथ के साथ इलाज ले रहा है, आधे मरीज तो अच्छा डॉक्टर साहब आपके यहाँ इलाज होता है क्या? होता है। अच्छा हम सोच के आएंगे। अब कोई विश्वास से लेने के लिए बैठ गया तो इलाज तो करेंगे ना उसका। अब करेंगे, ठीक है। एक तो चैलेंज, उसका भी चैलेंज, मेरा भी चैलेंज, ज्यादा जिम्मेदारी हो गई ठीक करना उसको, ठीक है ना। कि मेरे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मेरे तो रोटी दूंगा। और सिम्टम कुछ नहीं, कैसे प्रिस्क्राइब करें। एक चीज हमने ऑब्जर्व की, जितनी देर मजदूर आदमी, स्त्री, पढ़ा लिखा नहीं, कोई सिम्टम नहीं कि आप क्या उसको कुछ खाने को, आपने जो रोटी लो टाइम की प्याज रोटी खाने वाला आदमी, जो नमक रोटी खाने जो मिल जाए वो खा लिया, उनके पास चॉइसेस नहीं होती है कि रहने की, पहनने की, शॉप करने की चॉइसेस है, कुछ नहीं था उसके पास। बस बात फैमिली हिस्ट्री नहीं, बाप 80-90 साल के का था तब तक बाल पूरे रहे। अब उसमें क्या पूछूं मैं, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी, कोई अप्रीहेंशन, कुछ नहीं। कहां से थी? एक चीज, जो 10-15 मिनट वो कंसल्टेशन में रहा, एक बार भी उसकी आंख ऊपर, और मैं मेरे को देखा था उसने दिखा कंटिन्यूसली टेबल में मिला, आंखें मिला, एक बार तो आई कांटेक्ट करता है ना, उसने पूरा टाइम आई कांटेक्ट किया। दिस बिकम्स अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक। हमारे पास जो कॉमन दवाइयां हैं मेल्स में यूनिवर्स की, ठीक है, सैलिशिया हो गई, लाइकोपोडियम हो गई, एसिड फॉस हो गई, हराइटा कार्ब हो गई, फॉस्फोरस हो गई, नाइट्रोम्यूर हो गई। अब इनमें से एक दवाई जो सबसे शाय, जो टिमिड हो, जो आंख ना मिला पाए आपसे, वो ढूंढो और उस मरीज को दो। कौन सी दवाई है? Haraita is the remedy. Where the patient is timid, where the patient will not make an eye contact very easily. ठीक है? So कुछ नहीं मिला केस में, लेकिन ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन का रोल। आप ये नहीं कह सकते मरीज तो देगा आपको, आपने लिया है नहीं, आपने लिया है, आपने देखा है नहीं। इसीलिए तो एरिकन कहता है कि कीप योर सेंसेस ओपन, रिसीव फ्रॉम ईच एंड एवरी सेंस। सिर्फ मरीज जो बोल रहा है वही मत देखो, जो मरीज दिखा रहा है वो भी देखो, जो मरीज सुना रहा है वो भी सुनो। कोई साइनिशिया का पेशेंट तुम्हारे को जूता खोल के थोड़ी कहेगा ले मेरा जूता सुन, देख बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है। वो चेंज इन ऑर्डर यू हैव टू परसीव, जो ऑर्डर है रूम का उसमें परसेप्टिबल चेंज आ रहा है या नहीं, वो हैव टू स्मेल फ्रॉम हियर। कभी कभी पेशेंट का अटेंडेंट बोलेगा या कभी कभी पेशेंट खुद भी बोलेगा, पर ज्यादातर केसेस में नहीं बोलेगा। If it is not related to the pathology, if it's not related to the disease, patient will not voluntarily give that information. But even in such cases, you have to do. And in such cases, your observation, your senses, they play a significant role. ठीक है? अब before we wind up, एक छोटा सा केस जो मेरा नहीं है, मैडम ने ट्रीट किया, ठीक है? It's just going to take 5 minutes. The cases of infertility. Infertility हम कितनी जल्दी ठीक कर सकते हैं? 32 साल की औरत, हाउसवाइफ, सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, शायद 6 साल शादी को हो गए थे। मैं सिर्फ ये केस इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरा केस नहीं, हमने देखते पर हमारे केसेस अक्सर कॉमन होते हैं, एक दूसरे के केसेस देखते रहते हैं। और स्पीड ऑफ क्योर, ऐसे केस में जहाँ पर इनफर्टिलिटी का इलाज कोई ड्यूरेशन नहीं होती, सालों चलता है, और 6 साल से वो लेडी जयपुर के हर फर्टिलिटी सेंटर में चक्कर लगा चुकी थी, जितने हार्मोनल ट्रीटमेंट हो सकते थे करा चुकी थी, अनेबल टू कंसीव। ठीक है, चीफ कंप्लेंट इनफर्टिलिटी, नो अदर कंप्लेंट।
इनफर्टिलिटी का कोई कॉज नोन नहीं। मैरिड सिंस 2005 यानी 6 साल की शादी। Has taken from fertility centers। एक चीज हिस्ट्री में मिली that she has also taken ATD for as part of the fertility treatment। ATD is tuberculosis। Now often fertility के लिए जहाँ पर fallopian tube का blockage suspect किया जाता है, tuberculosis नहीं भी होती है तो भी blanket में एलोपैथ्स ATD prescribe कर देते हैं। So it doesn't mean ATD खाया है, doesn't mean कि उसको tuberculosis था। So as an etiology we are not going to take it significant। पास्ट हिस्ट्री में एक बार मलेरिया हुआ। मलेरिया में कौन सा? सेरेब्रल मलेरिया, बट एट द एज ऑफ 12-13। वी डोंट नो इफ इट हैज एनी बियरिंग ऑन इनफर्टिलिटी और नॉट। ऐसा मरीज अगेन वन साइडेड केस जिसको हम कहते हैं ना, अभी हम सारे केसेस ऐसे डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दिस मिलास्मा केस जहां पर आपको मेडिकल्स अच्छे दिए पेशेंट में, पर बेड या मरीज आके फाइल देख लो और कुछ नहीं होता। कभी तो ऐसी कोई विशेष प्यास ठीक लगती है, भूख ठीक लगती है, नींद ठीक आती है, कोई और दिक्कत नहीं। और पहले कभी नहीं कोई और कभी कोई लंबा बुखार कोई और तकलीफ नहीं। हाँ बचपन में एक बार मेरे को मलेरिया हुआ था, दिमागी वाला, और कुछ नहीं और कुछ नहीं। अब क्या करें? हाँ अब क्या करें? ऐसा तो नहीं हो सकता जो पेशेंट 6 साल से इनफर्टिलिटी के लिए चक्कर लगा रही है उसमें कुछ नहीं होगा, उसके जहन में उसके इमोशंस में कुछ नहीं होगा। अगर कुछ कह रही है कि कुछ नहीं है, कुछ बता नहीं रही है, तो दिस इटसेल्फ बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक। हिंदुस्तान में औरत को किस तरह से ताने मारे जाते हैं, भले मेल को इनफर्टाइल हो, पर सारा जिम्मा औरत का होता है, बच्चा पैदा करना, मेल पैदा करना, बच्चा हर चीज के लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, और बच्चा पैदा ना हो, मेल पैदा ना हो तो फीमेल ही दोषी है। कोई नहीं छोड़ता, पढ़े लिखे रेंज घर कैसे भी हो, नहीं, औरत को नहीं छोड़ते। तो ऐसी जहां पर सोशल स्ट्रक्चर में जो औरत रह रही है, 6 साल से फर्टिलिटी के लिए लड़ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके अंदर कुछ नहीं और फिर भी वो कह रही है कुछ नहीं। Periods, 2 complaints, NAD, regular periods, last अप्रैल 6 अप्रैल को periods आए। Appetite, moderate, thirst अच्छी लगती है, खाना कैसा अच्छा लगता है, थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है, थर्मल गर्मी थोड़ी सी ज्यादा लगती है, पर देखो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा। जब तक कोई सिम्टम बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो, मैं कहता हूँ जब शुरुआत करनी है तो सॉलिड सिम्टम से। पर्सपिरेशन, पसीना बहुत आ रहा है, खासतौर पे चेहरे पे। नेचर हमने देखा कुछ नहीं बता रही, तो हमने नेचर कैसा लिखा? इंट्रोवर्ट, कुछ नहीं शेयर कर रही। बहुत पूछो किसी चीज के बारे में, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो तो उसका 1-2 शब्द में आंसर दे देगी, नहीं तो जब उससे बहुत पूछा कि कोई और चीज अच्छी लगती है, कुछ अच्छा लगता है, इसमें तो और कुछ नहीं अच्छा लगता है। जानवर बहुत अच्छा, पालतू जानवर बहुत अच्छा, जिसको कुछ नहीं अच्छा लगता उसको पालतू जानवर अच्छा, ठीक है। घूमना अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा लगता है, कोई शौक नहीं बताया उसको, न म्यूजिक, न ड्राइंग, न गाना, न खाना, न घूमना, न सजना सवरना। क्या अच्छा लगता है? पेट्स। दिस बिकम्स, अब देखो मैं कड़ियां दिखाता हूँ तुमको। रूब्रिक है लव एनिमल्स फॉर पेट्स। सिंगल दवाई, the case was not recognized. The remedy is natramine, only one medicine। अब तुम इसको देखो, एक सिंपल पकड़ा हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक था, इंटरप्रेट नहीं किया उसको, ऐसा का ऐसा हमने रूप में दिखाया। अब देखो इसको कोरिलेट करके देखो, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन
Good thirst, desire for spicy food, introvert. मैच कर रहा है. मलेरिया, तुम भी अभी कह रहे थे कि पुरानी हिस्ट्री में मिल जाए. Is natural be a good remedy for malaria? Yes. हमने वो सब लिया नहीं, just रिवर्स एनालिसिस में दिखा रहा हूँ कि देखो वहां पर भी वो टेंडेंसी जो है उस अभी की दवाई कवर कर रही है. What we did 10/4 को भी प्रिस्क्राइब 2011 Natrum 1 and 1 dose PL for 1 month. What happens on follow-up? 14/5/11 UPD positive. She is pregnant. She is still pregnant. Her expected date of delivery is 11th January 2012. 2 हफ्ते लगे उसको कंसीव करने में. 2 weeks. Speed of action of the right homeopathic therapy. जो लेडी 6 साल से धक्के खा रही थी, सिमिलम दिया नेक्स्ट साइकिल में, उसी साइकिल में विदिन 2 weeks शी कंसीव. 4 हफ्ते बाद आई है तो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट लेके आई है पॉजिटिव. उसके बाद भी मैंने उसको ट्रीट किया है फॉर मॉर्निंग सिकनेस एंड फॉर ऑल द प्रेगनेंसी रिलेटेड कंप्लेंट्स स्टिल कम्स. व्हाट आई वाज कि इससे जल्दी क्या हो सकता, इससे जल्दी क्या हो सकता. तो हमने देखा एक कंप्लेंट 8 साल की PCOS, 2 साल का मिलाज्मा, 6 साल की इनफर्टिलिटी, ऑल रिजॉल्व इन ड्यूरेशन ऑफ वीक्स. कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते में लेडी प्रेग्नेंट हो गई. 2 हफ्ते में मिलाज्मा ठीक होने शुरू हो गया. लगभग 4 से 6 हफ्ते में पूरा ठीक हो गया. PCOS के केस में 1 महीने के अंदर साइकिल नॉर्मल हो गई, जो कि आज तक नॉर्मल है. What would be quicker than this? What would be faster than this? Then why do we say that homeopathy works slowly? It doesn't. It works fast. It works quickly. Condition is that you take your case properly, you evaluate your symptoms properly, you repertorize your case, find the right symptom, use the right potency, repeat judiciously, and then you see not results, you see results. Okay ना? This is the summary. Okay. कभी ये मत सोचो होम्योपैथी धीरे काम करती है. होम्योपैथी तभी धीरे काम करती है जब हम डिलिजेंट हैं. जब हम ईमानदार नहीं है मरीज के साथ, तभी हमारी दवा धीरे करती है. अगर हम ईमानदारी से मरीज को सुने नहीं, ईमानदारी से मरीज को देखे नहीं, ईमानदारी से सिम्टम्स को असेस नहीं करें, तब हमारी दवा धीरे काम करती है, क्योंकि तब हमारी दवा सिमिलम है. ठीक है ना? अगर दवा सिमिलम है तो कभी